Okay, so if the straight away one thing you can see here that when you are near the charge particle, these lines are the electric field lines are closely spaced. So basically, near the spacing between the lines tells us the strength of the magnetic field. Okay, sorry, electric field. Okay, whether it is strong or it is weak. Okay, so when you move away from the charge particles. So you can see here that now the spacing between the electric field lines is increasing. So it is showing that it is getting weaker as we are moving away from the charge particles. So when we are moving near to the charge particles, these are now closely spaced. So it shows that here the strength of the electric field is high. In the same way, we can do it for the magnetic field. No, in the case of the magnetic field, again we cannot draw the lines individually for each pole, because in the magnet we have the two poles, so we can also call it as a magnetic dipole too, because it has a south pole and it has uh, a north pole. Okay, and always remember that magnetic field lines originate from the north poles and they terminate on the south pole. Like here in this case, you can see that now the magnetic field lines are originating from the north pole and they are getting terminated at the south pole. So near the north pole, again you can see that the spacing between the magnetic field lines is quite small, so strength is higher. So as you move away from the magnet, this spacing between the magnetic field lines will get larger, so it means the strength of magnet is weaker here. Also the direction at any point, now here I am just taking these three curves here, these three curves, these three one. So at any point, if you want to find out the direction of the magnetic field, you can find out by drawing a tangent here, tangent to the surface. So the what would be the tangent at this point? At this point, the tangent would be in this direction. Okay. At this point, tangent would be in this direction. At this point, tangent of the line would be in this direction. So basically, drawing the tangent at any point on this magnetic field line will give me the direction of the magnetic field at that point. Okay. So this is the theory which is written here in the magnetic field lines, and I don't think so that there are another story behind this one which you need to understand here. Okay, so coming toward the acha no, the interesting thing, sorry, which I missed here. Interesting thing is कि when we have a compass, ठीक है, magnetic compass, so obviously it always move toward the north pole and one move toward the south pole, ठीक है. So just tell me कि same poles repel each other, ठीक है. So then why north pole is pointed toward the north of the earth? क्यों? Why is it so? क्या कहते हैं आप? सर वो एक्चुअली साउथ पोल होता है. Yes, this is the reason. Okay, if the earth, let's suppose the needle, north pole of needle is pointed toward the north of earth. So at the north of earth is basically there is a south pole of the earth's magnetic field that lies near the north of a earth. So that's why the north pole of the needle is pointed toward the north pole of the earth. ठीक है? Is it clear? सर रिपीट कर दे काइंड. Just okay. एक मिनट में आपको ड्रॉ करता हूँ. Here this is the compass here. Just ये ऐसे compass है. और this is the needle here. So one is the north pole. Let's suppose मैं कहता हूँ जी के, या चलें एक सेकंड, इधर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा. सर एक को ब्लू और एक को रेड से कर लें तो मैं वही करने लगा था बेटा.
ये आपके पास एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया, ठीक है। सो ब्लू को मैं कह देता हूँ नॉर्थ पोल है, रेड को मैं कह देता हूँ साउथ पोल है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास टेक्स्ट, चले मैं फॉर द सेक ऑफ जी, अच्छा जी, एन, ठीक है, और ये क्या है आपके पास एस है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली व्हेन यू हैव ए नॉर्थ पोल, अगर एक्चुअल केस में नॉर्थ पोल होता तो क्या होना था, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल शुड रिफ्लेक्ट द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो होता ये है कि दिस इज द अर्थ, लेट्स सपोज दिस इज द अर्थ का मैं कह देता हूँ जी नॉर्थ पोल है, ठीक है। दिस इज द अर्थ नॉर्थ पोल, ठीक है। सो हेयर द अर्थ मैग्नेटिक North pole does not exist. Here exists the Earth's magnetic south pole of the Earth. ठीक है, means that it is the North pole. ठीक है, आपके पास जो है it is the geographical North pole. Geographical North pole जो कि हम लोग देखते हैं जी North pole है. But the magnetic South pole, here will be magnetic South pole. ठीक है, that's why this north is attracting toward the south. अगर ये north होता, magnetic north होता, so needle can never be pointed toward this one. Because it is the magnetic south pole, so needle is pointing toward this one, and it lies near to the geographical north pole of the earth. So this north is showing the north direction. So is it clear now, beta? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so this is the reason behind this one. कि compass needle is pointing toward the Earth's north pole. चलें, so now going toward the beta next आपके पास क्या है एग्जाम्पल है। रोजा कैसा लग रहा है आप लोगों को, ज्यादा या कम ही? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा रोजा दिन इतना गुजर फर्क रहा नहीं है। करता, बस ये है कि गुजर ही जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। चलें, गुड है। बस बेटा आखिरी अशरा शुरू हो गया, तो बेटा दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, मैंने कभी कहा ही नहीं आपको रमजान में, तो चले। अच्छा, नो हियर दे आर गिविंग एन, जरूर बेटा, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 1.2 मिली टेस्ला इज इट्स मैग्नीट्यूड। हियर ग्रीन कलर इज शोइंग द अर्थ मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज आउट ऑफ द पेपर, ठीक है जी। चैम्बर है, उसने कहा जी जो भी चैम्बर यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज द फिगर एंड यू कैन सी हियर दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज out of the paper. So out of the paper means that it is shown. How I come to know that it is shown with the uh, dot here. Okay, so the strength of this magnetic field is 1.2 millitesla, ठीक है। A proton, ठीक है, obviously proton means that we have the positive charge particle with the kinetic energy of 5.3 mega electron volt, ठीक है, enters the चैम्बर, यहाँ पे चैम्बर में मूव करता है एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वन इज साउथ, मतलब ये है आपका, जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ है, ये शो हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन इसकी। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज के वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग फोर्स that is acting on the proton when it enters into the chamber, and the mass of the proton is 1.67 in 10 power minus 27. So up to this point any confusion कि क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इज मूविंग इन सर आपका माइक म्यूट है। इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर है बॉल जी बेटा। सर जी आपका माइक म्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे बेटा ये है कि ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इनटू थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। नो द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर, so we have to find out the deflect direction of the deflecting force and the strength of the deflecting force, ठीक है। so ये अब फिगर तो क्लियर होगी है ना, कुछ चीज पूछने वाली है इसमें बेटा? चले,
अच्छा, नो वी डू नो दैट के मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई दी F इज इक्वल टू QVB वेयर जो है आपके पास Q इज नॉन चार्ज ऑब्वियसली. जो आपके पास 1.9 इंटू 10 पावर क्या होता था चार्ज, 1.9 होता था, 1.6 होता था. 1.6 1.6 इंटू 10 पावर -19 बेटा. ठीक है. ये चार्ज था. और देन आपके पास क्या है, B known है which is equal to 1.2 millitesla. The only quantity that is unknown to us is V here. So first we have to find out the V. So how we can find out the V? We will use the relation kinetic energy is equal to half mv square. ठीक है. So energy is kinetic energy is given by which is 5.3 mega electron volt. So we will rearrange this equation according to the V. So V is here equal to this one to K over M, where K is 5.3 mega electron volt. ठीक है. And we have converted it into the joule. So obviously क्या होता है, 1 electron volt is equal to 1.6 10 power minus 19. ठीक है, joule के बराबर होता है. When we will put it, so mega is equal to 10 power 6. So when I will multiply it 10 power 6 with 10 power minus 19, so it would be equal to minus 13 as here given by. ठीक है. So I will use this conversion and I will get the relation which is equal to this one. Clear हो गया up to this point how we are converting the 5.3 into joules. पता चल गया आपको कि नहीं? जी बेटा, पता चला है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, जी लग जी गई सर, समझ। जी जी अच्छा सर। अच्छा, ठीक सर वो है. कुछ स्टूडेंट क्या इनको लैटिन कर लें क्लास में? बेटा मेरे पास जो भी है उन सारों को मैंने ऐड किया हुआ है. ओके सर। जो हाँ हाँ, मतलब कोई मजीद वेटिंग में नहीं है पार्टिसिपेंट बेटा अभी शो हो रहा मेरे पास. ठीक है. चलें, आफ्टरवर्ड्स क्या है बेटा कि आफ्टरवर्ड्स then we will use this relation. This is the relation here. ठीक है. So now we do know the value of Q, V and B. ठीक है. So angle is 90 because it is out of the paper and it is moving horizontally. So obviously the angle is 90. So I will put this value and then the result is this is the value of the magnetic force. So also he has calculated the, एक सेकंड बेटा ये हो क्या रहा है मेरे साथ. हाँ ये also he has calculated the acceleration of the charged particle. So he used the relation F is equal to ma and force is calculated, mass is given by so this one. So the direction of the charged particle can be determined. Again now you will take the fingers out of the in the upper direction while the velocity thumb will give you the velocity direction of the velocity which is in the opposite direction. ठीक है, away from your space. ठीक है. So your perpendicular of the palm will give you the direction of the force. ठीक है, which is in the rightward direction. यही आ रही है आपके पास भी? किया आप लोगों ने बेटा? Fingers in the upper direction, thumb is away from your face. So the right direction जो होगी वो क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स होगी. सो मेरे ख्याल है बेटा आज के लिए बहुत है कि मजीद आपने कुछ करना है. वैसे मैंने अगला आर्टिकल भी पढ़ा हुआ था आज के दिन के लिए कि काफी है आज के लिए. काफी है सर जी। सर काफी है। चलें चलें बेटा, फिर बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी बेटा कल. ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके सर। बेटा. ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
फिर अल्लाह हाफिज।